गाजा फ्लोटिला का कहना है कि पुर्तगाली झंडे वाली नाव को ड्रोन ने टक्कर मारी। पब्लिको द्वारा प्रकाशित। ट्यूनिशियाई जल क्षेत्र में हुए इस हमले के कारण जहाज में आग लग गई, जिसे जहाज के चालक दल ने बुझा दिया। बेड़े की ओर से जारी एक बयान के अनुसार नुकसान सतही था और जहाज अपनी यात्रा जारी रखेगा। गाजा के लिए ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला (GSF) ने मंगलवार सुबह बताया कि उसके एक मुख्य जहाज पर ट्यूनिशियाई जल क्षेत्र में एक ड्रोन ने हमला किया है, लेकिन 6 यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं। नुकसान केवल सतही था और जहाज इस बुधवार को गाजा जा सकता है। GSF ने एक बयान में बताया कि पुर्तगाली झंडे वाला ये जहाज, जिसे फैमिली बोट के नाम से जाना जाता है, मुख्य डेक और डेक के नीचे के स्टोरेज में आग लगने से क्षतिग्रस्त हो गया। कार्यकर्ता मिगुएल डुआर्टे के अलावा इस बेड़े में वामपंथी ब्लॉक की समन्वयक मारियाना मोटागुआ और अभिनेत्री सोफिया अपारिसियो भी शामिल हैं। GFS ने अपने बयान में कहा, हमले के कारण आग लग गई, जिसे मौके पर मौजूद चालक दल ने बुझा दिया। जांच शुरू कर दी गई है और जानकारी उपलब्ध होने पर उसे जारी किया जाएगा। धमकी और व्यवधान पैदा करने वाले आक्रामक कृत्यों से मिशन को रोका नहीं जा सकेगा। गाजा की घेराबंदी तोड़ने और फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का मिशन जारी है। पश्चिमी तट और गाजा के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने भी एक्स पर एक पोस्ट में इस घटना की सूचना दी। फ्रांसिस्का अल्बनीज ने लिखा कि फ्लोटिला के प्रमुख जहाज फैमिली पर ट्यूनिस बंदरगाह में एक ड्रोन द्वारा हमला किया गया था, और आगे कहा कि 2 अन्य जहाज ट्यूनिस के रास्ते में हैं और उन्हें तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने उस क्षण का फुटेज भी साझा किया जब ड्रोन जैसी दिखने वाली आवाज के बाद जहाज पर एक विस्फोट दिखाई देता है। तत्काल रिहाई के लिए ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला GSF ने पुष्टि की है कि मुख्य नावों में से एक, जिसे फैमिली बोट के नाम से जाना जाता है, जिस पर GSF संचालन समिति के सदस्य सवार थे, एक ड्रोन ने हमला किया। नाव पुर्तगाली झंडे के नीचे थी और फ्रांसिस्का अल्बनीज ने रॉयटर्स को बताया, हमें नहीं पता कि हमला किसने किया, लेकिन अगर यह इजराइल ने किया तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो ये ट्यूनिशियाई संप्रभुता पर हमला होगा। इजराइल की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं ट्यूनिशियाई आंतरिक मंत्रालय ने इस हमले को खारिज करते हुए कहा कि सिदी बो सईद बंदरगाह में ड्रोन द्वारा नाव पर हमला करने की रिपोर्ट का वास्तव में कोई आधार नहीं है और आग जहाज पर ही लगी थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के अनुसार घटना के बाद सैकड़ों ट्यूनिशियाई लोग सुबह के समय सिदी बो सईद बंदरगाह पर एकत्रित हुए और बेड़े के साथ एकजुटता दिखाई, जिसमें फिलिस्तीन अमर रहे के नारे सुने जा सकते थे। यह फ्लोटिला एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य 44 देशों के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा समर्थित नागरिक नौकाओं के माध्यम से गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना है। वर्ष 2007 में हमास द्वारा गाजा पर नियंत्रण करने के बाद से इजरायल ने इस क्षेत्र के तटीय क्षेत्र पर नौसैनिक नाकेबंदी लगा दी है। उसका कहना है कि इसका उद्देश्य उग्रवादी समूह तक हथियारों को पहुंचने से रोकना है। यह नाकाबंदी पूरे संघर्ष के दौरान जारी रही है, जिसमें वर्तमान युद्ध भी शामिल है, जो तब शुरू हुआ जब अक्टूबर 2023 में हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया, जिसमें 1200 लोग मारे गए और लगभग 250 बंधक बना लिए गए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमास पर इजराइल के बाद के सैन्य हमले में 64,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि एक वैश्विक भूख निगरानी संगठन का कहना है कि गाजा पट्टी में कुछ लोग अकाल से पीड़ित हैं। इजराइल ने मार्च के आरंभ में गाजा पट्टी को भूमि से घेर दिया था, जिससे वहां 3 महीने तक खाद्य आपूर्ति नहीं हो सकी थी, क्योंकि उसका तर्क था कि हमास सहायता को अन्यत्र भेज रहा है। We wouldn't have seen anything left from the ship. Therefore, we continue with our mission. We will continue our preparation as soon as we make sure the ships are safe and the crew and the participants are safe. We will continue to break the siege on Gaza. Yeah, so the evidence that we have available, which is obviously limited at this time, indicates that there was an incendiary device, some kind of incendiary device that was used on the ship itself, caused a fire that was approximately 2 meters, went on for about 5 to 6 minutes. The crew who were on the ship were able to extinguish the fire themselves, thankfully. Thankfully, also nobody was harmed. There were 2 individuals who were sleeping relatively close to where the fire occurred, and a total of 6 people on the vessel. And so the appearance is that this is a violation of Article 2.4 of the United Nations Charter. In other words, an unlawful use of force against the territorial integrity or political independence of another state. That would include, to be specific, the state of Tunisia.
as well as the flag state of the vessel, which I understand is Portugal. Can I have the microphone? Yeah, as you know, Israel is consistently attacking to stop flotilla ships before sailing. It happened with the conscious attack. Now this is happening with vessel family. As Heidi says, under the Portuguese flag and under the Tunisian jurisdiction, both are Rome Statute for both Rome Statute applies, and under Article 8 this is a war crime. And again, in the context of what's happening in Palestine, starvation as a warfare, this is again the extension of Israel's policy of starvation, and from that perspective it's a war crime again, as well as the crime of aggression. So here's clear, message is clear. It happened in Turkey. Israel applied all kind of bureaucratic warfare to stop flotilla ships, to stop flotilla ships before sailing, and we see the similar scenario. After they failed to manage it with the conscious ship, they did it by bombing. Here the same scenario applied, and when they couldn't manage either of these, they intercept the ships in the high seas. So Israel, we are familiar with these scenarios. All the independent investigation will be conducted, ballistic and otherwise, for the criminal and legal purposes, and everyone should keep following. We demand independent UN observers as well for the surveys. Thank you. I would say attention is also necessary at the level of the United Nations Security Council as well. And just to point out, with utter clarity, there is no possible justification, in fact, or law for an attack on a civilian vessel, a vessel that is unarmed, that poses no danger to anybody. So absolutely no justification in terms of deterrence or self-defense that Israel or any other entity may wish to put forward in this case. So this is a direct attack on a civilian vessel. Okay, we're going to get a statement with Judge Francesca. Thank you. Thank you. Who's this? Ours. Thank you. Okay, 1 second, sorry. And I happen to be here as an independent expert because I live 6 minutes from here. And what I found coming here is a lot of shock, because apparently what comes out of the facts as they are known, the main flotilla boat, the family, has been attacked by a drone. Of course, it will have to be verified, but there is a history of attacks on the flotilla. There are current statements against the flotilla, threatening the flotilla, of course, from Israel, but there is no other state currently protecting this boat other than Tunisia creating a safe port. The question is, it's confirmed that this is a drone attack, it will be an assault and aggression against Tunisia and against Tunisian sovereignty. And again, we cannot keep on tolerating this and normalizing the illegal. Make sure you're on the GSF and not mine, though. I think that the flotilla spokespeople are doing the flotilla spokespeople, so I don't expect anything. I expect them to be spokespeople. What about the reaction of the Tunisian government? I've not heard any reaction from the Tunisian government. I trust this country. This is where I live. This is a place that I call home. So I really implore the Tunisian government to continue to extend protection to these people. And if it's an attack from a drone that was directed at a flotilla, we really need the Tunisian government to step up and denounce this, because this would be, from a legal point of view, under international law, an attack against Tunisian sovereignty. And what's your message or request to the international community? To break the siege. Instead of waiting for people to put their life at risk, mothers and fathers and ordinary citizens, do your job.
do your job, which is breaking the siege. There are already more than 60,000 people are certain dead, killed by bombs. Hundreds and hundreds have been killed. More than 1,700 have been killed while seeking for food, and over 300 have died. Supported by the intent to destroy, to create conditions to destroy a people. This is a textbook case of genocide. But call it the way you want, just stop it. There is an obligation to prevent, an obligation to stop genocide, and also there is an obligation to enforce and ensure enforcement of international humanitarian law. Even if we call it a war, this is no longer a war. This is an attack against civilians. So. And what do you think about the timing of this explosion? Okay. Do I need to comment that? Thank you. Thank you. Okay, that's good.